Hello students, welcome back to Edviz Learning. Today we will continue with the problem set 5 of chapter number 5 coordinate geometry, but let us revise what we've done before in the chapter, okay, in the earlier sessions. We started with something called as the distance formula. Why is distance formula used? To find out the distance between any 2 points on the coordinate axis, correct? That is why we use the distance formula, and by now I hope you have by-hearted it. Now next, after that we studied something called as the section formula. सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज होता है? टू फाइंड आउट अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू अदर पॉइंट्स इन अ सर्टेन रेशियो, करेक्ट? सेक्शन फॉर्मूला का भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था. आफ्टर दैट, बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला वी डिराइव्ड टू मोर फॉर्मूलाज. ओके, वन वाज द मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, करेक्ट? लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर फाइंड करना है बेस्ड ऑन द टू एंड पॉइंट्स, दैट्स व्हाई वी यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला. After that, we saw the centroid formula to find out the coordinates of the centroid of any triangle. हम लोगों को सिर्फ 3 vertices का coordinates दिया होगा. Based on that, we have to find out the centroid of that triangle. Correct? And based on these formulas, we solved practice set 5.2. After that, we saw something called as the slope formula. Slope formula हम लोग use करते हैं to tell certain properties about line segments या फिर पॉइंट्स, करेक्ट? स्लोप के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज. पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, करेक्ट? एंड एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड, एंड सेम इज द केस फॉर लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, करेक्ट? बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप एंड द स्लोप फॉर्मूला हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व किया. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम सेट 5 ऑफ दिस चैप्टर, एंड सो फार वी covered question number 8 in our previous session. Today we will start with the question number 12. Okay, question 12 will be the next question we will be solving. All the other questions, they have already been covered in your homework assignments. So question number 12. By the way, if you have any doubts in all of your homework assignments, you can always raise them on the portal. Okay, we will get them solved easily. So far we will start with question number 12. Question number 12 is show that the quadrilateral PQRS formed by points P, Q, R and S is a rectangle. तो 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, हम लोगों को प्रूव करना है कि दोज कोऑर्डिनेट्स आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. ओके, अभी इससे पहले हम लोगों ने जो सम सॉल्व किए इन प्रीवियस एक्सरसाइजेस, दे वर बेस्ड ऑन वेदर इट इज अ पैरेललोग्राम और नॉट. पैरेललोग्राम अगर हम लोगों को प्रूव करना है, हम लोग स्लोप फॉर्मूला से इजीली कर सकते हैं, राइट? ऑपोजिट साइड्स का स्लोप अगर इक्वल आया देन इट इज अ पैरेललोग्राम. बट हियर वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. अभी रेक्टेंगल इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ पैरेललोग्राम? ओके, इफ दिस इज अ रेक्टेंगल, ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो है ही, इट इज अ पैरेललोग्राम आल्सो. ओके, एंड ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, करेक्ट? ये तो सब पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज है. तो इसमें एक ऐसी एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है जो हम लोग यूज कर सकते हैं प्रूव करने के लिए कि इट इज अ रेक्टेंगल, नॉट जस्ट एनी पैरेललोग्राम, ठीक है? तो वन एडिशनल प्रॉपर्टी इफ यू रिमेंबर फ्रॉम लास्ट ईयर, ओके, इज दैट रेक्टेंगल के अंदर जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, इफ दिस इज अ रेक्टेंगल, जो दोनों डायगोनल्स होते हैं उनका लेंथ इक्वल होता है, करेक्ट? सो AC इज इक्वल टू BD. दिस इज व्हाट is given additional for a rectangle. Okay, this is how it is different from a parallelogram. तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं to prove it is a rectangle. How? Let us see question number 12. The coordinates given to us are P2, 1, Q -1, 3, R -5, -3, and S is the last coordinate, that is -2, -5. So these are the 4 vertices given to us. We have to prove it is a rectangle. तो पहले हम लोग, जैसा कि मैंने बोला, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं यहाँ पे. तो लेट अस प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम फर्स्ट. ऑपोजिट डिस्टेंसेस इक्वल प्रूव करके, ठीक है? लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट डिस्टेंस PQ. डिस्टेंस PQ हियर will be equal to square root of the formula of finding out distance between 2 points is x2 minus x1 the whole square. So -1 minus 2 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So 3 minus 1 the whole square. So this will be equal to square root of, so this is -3 square plus 2 square
Okay, this will be equal to square root of 9 minus 3 square is 9, positive 9 plus 4. So root 13 is one of the sides that we are getting. Okay, side PQ. Similarly, we have to find QR also. So let us find QR. By the way, what is the side parallel to PQ? If it is a rectangle, the side parallel to PQ will be RS. तो let us first find RS. और अगर वो equal आता है तो हम लोगों को एटलीस्ट स्टार्टिंग में कुछ पता चल जाएगा. So distance RS will be equal to square root of x2 minus x1. So minus 2 minus minus 5. Okay, the whole square plus y2 minus y1 will be minus 5 minus minus 3. The whole square. Alright, so now let us solve this. This will be equal to minus 2 plus 5 the whole square plus minus 5 plus 3 the whole square. So square root of minus 2 plus 5 is 3, so 3 square, and this is minus 5 plus 3, that is minus 2 the whole square. So once again you can see 3 square or 2 square, यहाँ पे 3 square और minus 2 square. Minus 2 square is same as 2 square, which is 4. We are getting the same thing. Okay, square root of 9 plus 4. So once again we are getting root 13 units as the distance RS. तो opposite distances equal R है. One more opposite pair हम लोगों को equal prove करना है, which is QR and PS. Okay, QR and PS. So first find out distance QR. Distance QR is square root of x2 minus x1. So minus 5 minus minus 1. The whole square plus y2 minus y1, which is minus 3 minus 3 the whole square. So minus 3 minus 3 the whole square. Okay, this will be equal to square root of minus minus will become plus, so minus 5 plus 1 the whole square plus minus 6 the whole square. Okay, so once again here minus 5 plus 1 will be minus 4, minus 4 ka square will be positive 16. Okay, so this will be 16 plus this is 36. Okay, minus 6 ka square is positive 36. When we add these two, we will get square root of 52. Correct? Square root of 52 units. We are getting distance QR. Now one more distance that is left to find out is distance PS. Let us find out distance PS. Distance PS will be once again equal to square root of x2 minus x1. So minus 2 the whole square plus y2 minus y1. So minus 5 minus 1 the whole square. Okay, this is equal to square root of minus 4 square plus minus 6 square. Okay, these two are once again negative numbers, but still the square will be positive. So once again we are getting square root of 16 plus 36, which is same as square root of 52 units. So you can see clearly that the opposite sides are equal. That means at least this is a parallelogram, but we have to also prove that it is a rectangle. Correct? But rectangle अगर prove करना है मुझे, तो how do we do that? We have to prove that diagonals भी equal होगा. अभी अगर मैं PQRS का एक rectangle बनाऊंगा, तो हम लोगों ने prove किया कि PQ is equal to RS and PS is equal to QR. We have to also prove that PR, distance PR will be equal to distance QS. Correct? तो नेक्स्ट पेज में हम लोग वो करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस क्विकली. आई विल गिव यू 30 seconds टू राइट दिस डाउन. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. Okay students, so I hope you are done writing this. Now let us go to the next page.
So as you can see, once again I have written the points and the diagram for my reference. So next step, we have to prove that the diagonals are equal. Okay, PR and QS ये distance भी equal आना चाहिए. So let us find out distance PR. Distance PR will be equal to square root of x2 minus x1. So now P and R are the points. So minus 5 minus 2 the whole square plus y2 minus y1, that is minus 3 minus 1 the whole square. Okay, so this will be equal to square root of minus 7 square plus minus 4 square, that is square root of 49 plus 16. Okay, this will be equal to square root of 65 units. Okay, that is distance PR, square root of 65 units. Similarly, we have to find the second diagonal distance QS. So distance QS will be equal to square root of x2 minus x1. Okay, once again, so QS के लिए x2 is minus 2 and x1 is minus 1. So minus 1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So y2 is minus 5. Okay, and y1 is minus 3. Not minus 3, it is plus 3, but minus 3 कर रहे हैं हम लोग. So square, this is equal to square root of minus 2 plus 1 the whole square plus minus 8 the whole square. Okay, so finally we will get square root of, this is minus 2 plus 1, that means just minus 1 square plus this is 64. Okay, now minus 1 square will be nothing but positive 1. 1 plus 64 will be equal to square root of 65 units once again. So clearly the diagonals of this parallelogram are also equal. So if it is a parallelogram and the diagonals are equal, that means it is what kind of parallelogram? It is a rectangle. ठीक है, so अभी हम लोगों को finally लिखना है, since opposite sides, which are the opposite sides? Distance PQ is equal to distance RS and distance PS is equal to distance QR. Quadrilateral PQRS is a parallelogram. Okay, and also since the diagonals are equal, it is a rectangle. Also, since diagonals, which are the diagonals? One diagonal is PR, next is QS. So diagonal PR is equal to diagonal QS. This is a rectangle. It is a rectangle. Okay, so it is also a parallelogram and also a rectangle. With this, we are done with this question. I'll give you 30 more seconds to note this down, then we'll move on to the next question. Finish this fast. Okay, moving on to the next question, that is question number 13. Find the lengths of the medians of a triangle whose vertices are A, B and C. Okay, going on to the next page. Question 13. So first of all, you must know what is the meaning of the word median. What is a median? If this is a triangle ABC, okay, in this triangle, median will be the line joining the midpoint of a side to its opposite vertex. Okay, so if B and C का midpoint is M, correct? M और उसका opposite vertex A को join करने वाली line को हम लोग
मीडियन बोलते हैं। सिमिलरली इस साइड के लिए मीडियन क्या होगा, AC का मिड पॉइंट एंड B को ज्वाइन करने वाली लाइन, करेक्ट। फॉर दिस साइड AB का मिड पॉइंट एंड C को ज्वाइन करने वाली लाइन। रिमेंबर, मीडियंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट वन सिंगल पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मीडियन। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द मीडियन? ओके, सो इन दिस डायग्राम A का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हम लोगों को, करेक्ट। पॉइंट A हियर इज -1, 1, okay, point B is 5, -3 and C is 3, 5. Let us assume that the points M, N and O are the midpoints of the respective sides. तो अगर मुझे मीडियंस का लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे पॉइंट A और पॉइंट M के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है। सिमिलरली इस मीडियन के लिए पॉइंट B एंड N के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। एंड CO ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट। फॉर दैट अगर हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे दोनों पॉइंट्स पता होना चाहिए, दोनों एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए, करेक्ट। पॉइंट A तो मुझे पता है, बट डू आई नो पॉइंट M? नो, वी डोंट नो। सो पॉइंट M कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, M क्या है? B और C का मिड पॉइंट। So we will use midpoint formula to find M. Similarly, midpoint formula to find N and midpoint formula to find O. Correct? तो एक बार तीनों पॉइंट्स मिल जाएगा, उसके बाद मुझे बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तीनों मीडियंस फाइंड करना है। So let us first find out the points M, N and O by midpoint formula. Okay? In triangle ABC, M is the midpoint of BC. Therefore, by midpoint formula, ठीक है, अगर मुझे M का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, सपोज x1, y1 जो भी आएगा वो, ठीक है, विल फाइंड दैट आउट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ M क्या होगा? x1 विल बी इक्वल टू, मिड पॉइंट है ना, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। This is the x coordinate of M, that is equal to 8 divided by 2, that is 4. Okay, similarly y coordinate क्या होगा? y1 plus y2 divided by 2, -3 plus 5 divided by 2. So it is nothing but 2 upon 2, that is 1. That means the first midpoint M we are getting here is 4, 1. Similarly हम लोग O और N भी find out करेंगे। O is the midpoint of side AB. So therefore x2 will be equal to, once again by midpoint formula, हम लोगों ने इनको assume किया है, ठीक है। M is, so we'll just write that in one statement here. Let point M be x1, y1, point OB x2, y2 and point NB x3, y3. Why we are writing this down? क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग x1, y1, x2 and y2 ये सब यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको एक बार लिख भी देंगे हम लोग, ठीक है। सो O के लिए x2 will be equal to मिड पॉइंट ऑफ A and B ना, so -1 plus 5 divided by 2, that is equal to 4 divided by 2, which is equal to 2. ये हो गया O का x coordinate. Similarly, we will find out the y coordinate. y2 will be equal to 1 plus -3 divided by 2. 1 plus -3 divided by 2. Now 1 plus -3 क्या हो जाएगा? 1 minus 3 हो जाएगा, correct? So 1 minus 3 is -2 divided by 2. That is equal to -1. So O का कोऑर्डिनेट्स क्या आया? 2, -1. So we'll write it here, 2, -1. Okay, and finally N का भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, so let us do that. N is the midpoint of the third side, that is AC. Okay, therefore x3 जो कि n का x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा?
for n -1 plus 3 divided by 2. So this is 2 divided by 2, that is 1, and y coordinate क्या होगा, y3 will be equal to 1 plus 5 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, that is 6 divided by 2, that is 3. So n का coordinates भी आ गया 1, 3. Once we have the coordinates of the midpoints O, M and N, median का length कैसे मिलेगा? Just use the distance formula for AM, BN and CO. That's it. ठीक है? So therefore length of median, first median लेते हैं हम लोग AM, will be equal to, use the distance formula, just use the distance formula. So x2 minus x1, -1 -4, हम लोग किसी को भी x2 ले सकते हैं, किसी को भी x1 ले सकते हैं. So -1 -4 the whole square plus y2 minus y1, अगर मैंने इसको x1 लिया है तो y1 भी यही लेना पड़ेगा मुझे, 1 -1 the whole square, correct? So 1 -1 the whole square. So what we will get here is square root of -5 square plus 0. Okay, 1 minus 1 is 0. -5 का स्क्वायर होगा +25. +25 का स्क्वायर रूट, अगेन हम लोगों का आंसर मिलेगा 5 यूनिट्स. दिस इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट मीडियन. सेकेंड मीडियन AM हो गया. नाउ BN अगर फाइंड आउट करेंगे, BN will be equal to square root of, once again x2 minus x1. So for BN, x2 minus x1 मतलब 1 minus 5 the whole square plus y2 minus y1 will be 3 minus -3. Okay, -3 है वहां पे, तो 3 minus -3 the whole square. This will be equal to square root of, so 1 minus 5 is -4. -4 का स्क्वायर कितना होगा? +16, करेक्ट? प्लस ये हो जाएगा 3 plus 3 the whole square, that is 6 square. So this will be equal to square root of 16 plus 36, that is equal to square root of 16 plus 36 is 52 units. Okay, this is the length of median BN. Now there is one more median left, so I will solve it on the next page. Till that time, please make a note of this. I hope you understood the question so far. फटाफट ये लिख के ले लो. I will give you 1 minute. Okay students, I hope you are done with this. Now let us find out the third median. I'll just go to the next page. So this is the diagram. I have drawn it once again. We have to find out the third median CO. That is the only thing left. So length of median CO will be equal to, again use the distance formula. So square root of, this time x2 minus x1 will be 3 minus 2 the whole square plus 5 minus -1 the whole square. 5 minus -1 the whole square. So this will be equal to square root of 1 square plus 5 plus 1 is 6 square. Okay, so we are getting 1 plus 36, that is root 37 units. So these three are the lengths of the median. The first one that we got here is
5 units. Second median is root 52 units. It can be further simplified as 2 root 13 units. Okay. And the third median is root 37 units. These are the lengths of the median. I hope you understood the question properly. Please make a note of this. I'll give you some time and then we'll move on to the next question. Okay, now let us go to the next question. I'll just change the page. Next question is question number 14. Find the coordinates of centroid of the triangles if points D, E and F are the midpoints of the sides of the triangle. Okay, now how is this question different? हम लोगों को generally जब centroid find करना होता है तो question में triangle के vertices दिए होते हैं A, B, C. But this time the vertices are not given to us. What they have given us is midpoint of all the sides. Okay, for reference I'll draw the diagram. Suppose this is the triangle. This is the vertex A, B, C. We have to find the centroid. Let us say the centroid is here. Okay, और दिया क्या है question में? Midpoints. These 3 points are given to us. D, E and F. Okay, point D is given as -7,6. Point E is given as 8,5 and point F 2, -2. So these are the 3 midpoints given to us. We have to find the coordinates of the centroid. Okay, but for centroid we already know centroid formula क्या होता है? x1 plus x2 plus x3 divided by 3. ये हो गया x coordinate. Y coordinate is similarly y1 plus y2 plus y3 divided by 3. But here we don't know these values. This is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3. We don't know these values here. Okay, so how will we find the centroid? Okay, if we solve this using simply midpoint formula first, देखते हैं क्या आता है. Because these 3 are the midpoints ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक साइड के ऊपर midpoint formula यूज करने को ट्राई करते हैं. So first of all, let us take side AB. For side AB, F is the midpoint. Okay, so let us use the midpoint formula. Therefore, F का जो x coordinate है 2, it will be equal to what? x1 plus x2 divided by 2. Correct? This is the midpoint formula, right? Midpoint का x coordinate is equal to x1 plus x2 divided by 2. Okay. Similarly, y के लिए क्या होगा? Y here is -2 equal to y1 plus y2 divided by 2. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर किया, 2 को इस साइड ले लिया हम लोगों ने, इट विल बिकम 4 इक्वल टू x1 प्लस x2. करेक्ट? एंड -4 equal to y1 plus y2. We will leave these equations like this, okay, for the time being. Let us go to the second side now. ये हो गया साइड AB. साइड BC के लिए D is the midpoint, correct? D is the midpoint, G is the centroid. Don't get confused here. ठीक है? So D का x coordinate will be x2 plus x3 divided by 2, correct? For BC, D is the midpoint. Therefore, D का जो x coordinate है -7, that will be equal to x2 plus x3 divided by 2. Okay. Now we'll also give names to these equations. This is suppose equation number 1. This is equation number 2. हम लोगों को इनको बाद में फिर से यूज करना है, तो फिर हम लोग रेफरेंस के लिए इनको नाम भी दे देते हैं. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. यहां पे क्या मिल रहा है? सो 2 इस साइड आ गया तो -7 से मल्टीप्लाई होगा. सो -14 विल बी x2 प्लस x3. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली
जो y कोऑर्डिनेट है d का 6 will be equal to y2 plus y3 divided by 2. Okay, 6 will be y2 plus y3 divided by 2. Take 2 on the other side, so 12 will be equal to y2 plus y3. This is the fourth equation that we are getting. Okay, now let us find out for the third side. Third side is AC. For AC, E is the midpoint. That means what? E का x coordinate 8 will be equal to x1 plus x3 divided by 2. Correct? And E का जो y coordinate है 5 will be equal to y1 plus y3 divided by 2. Okay, take 2 on the other side. This will be 16 equal to x1 plus x3. This is my equation number, let us say 5. Okay, similarly यहाँ पे क्या आएगा? If I draw a line here, यहाँ पे क्या आएगा? 10, 2 5s are 10 will be equal to y1 plus y3. This is my equation number 6. Now we have 6 different equations. Okay, तो ये काम कैसे आएगा सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए? सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है? x1 plus x2 plus x3 divided by 2. So here हम लोगों को सब पार्ट्स में मिल रहा है. x1 plus x2 is 4. Okay, x2 plus x3 is -7. x1 plus x3 is 8. हम लोग क्या करेंगे? ये x के जितने भी इक्वेशंस है सबको ऐड कर देंगे. Add all equations of x, that is equation number 1, equation number 3 और equation number 5. उससे क्या होगा? We will get the value of x1 plus x2 plus x3 डायरेक्टली. ठीक है, सेपरेटली फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है. We will directly get the addition of x1 plus x2 plus x3. ठीक है, so let us add equations. Adding equation 1, 3 and 5. Okay, if we add these three equations, what we will get is right hand side में x1 plus x2, first equation का क्या है? x1 plus x2. second equation का क्या है? right hand side. Okay, second equation का right hand side is x2 plus x3. सिर्फ x वाले ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, so x2 plus x3. और जो लास्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5, उसका राइट हैंड साइड x1 plus x3. x1 plus x3. ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? सारे नंबर्स जो भी है. यहां पे क्या है? 4, देन प्लस -14 प्लस लास्ट वाले इक्वेशन में 16. Okay, now if we add the equation, here we will get x1 plus x1, that is 2 times x1, plus x2 plus x2, that is 2 times x2, x3 plus x3, that is 2 times x3, equal to, what is the addition of 4 and 16? It is 20. 20 minus 14 is 6. So this is equal to 6. Now we can take 2 common from all these three variables. This will be equal to 2 times x1 plus x2 plus x3 equal to 6. Okay, take 2 on the other side. तो x1 plus x2 plus x3 क्या आएगा? 6 divided by 2. तो finally x1 plus x2 plus x3 will be equal to 3. करेक्ट? मतलब मुझे सेंट्रॉइड फॉर्मूला के लिए यही चाहिए था, राइट? सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है? x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाय 3. तो ये जो वैल्यू है इन तीनों का एडिशन का, वो मैं डायरेक्टली वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. करेक्ट? नाउ वी विल कंटिन्यू दिस सम ऑन द नेक्स्ट पेज. टिल दैट टाइम आई विल गिव यू सम टाइम टू मेक अ नोट ऑफ दिस. आई विल गिव यू 1 minute फॉर दिस. सो क्विकली नोट दिस डाउन.
Okay students, now let us go to the next page. I hope you are done writing this. तो जैसे हम लोगों ने x1 plus x2 plus x3 फाइंड किया है, ठीक उसी तरह से we'll also have to find out y1 plus y2 plus y3. ओके, और उसके लिए which equations we are going to add? x वाले सारे इक्वेशंस ऐड किए, तो इस बार y वाले सारे इक्वेशंस ऐड करेंगे. y वाले इक्वेशंस मतलब इक्वेशन नंबर 2, 4 and 6. ओके, so this time now adding equations 2, 4 and 6. ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड क्या था? इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड इज y1 plus y2. इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड वाज y2 plus y3. एंड इक्वेशन नंबर 6 का राइट हैंड साइड वाज y1 plus y3. एंड व्हाट इज ऑन द left hand side of all these three equations? 4, 12 and 10. Okay, minus 4, 12 and 10. So minus 4 plus 12 plus 10. So here similarly we will get 2 times y1 plus y2 plus y3. जैसे x के लिए मिला था सेम यहाँ पे भी वही आएगा, 2 times y1 plus y2 plus y3 equal to 12 minus 4 is 8 plus 10 is 18. Okay, so this time y1 plus y2 plus y3 will be equal to 18 divided by 2, that is 9. Okay, so we will use these equations to now find out the centroid. So by centroid formula, सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट होता है, g का x, y हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट? तो g का जो x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 divided by 3, and y coordinate will be equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Let us substitute the values. ठीक है, x1 plus x2 plus x3 already we know the value, y1 plus y2 plus y3 we know the value, that is 9. Okay, so let us substitute. Therefore gx y will be equal to 3 divided by 3, ये हो गया x1 plus x2 plus x3, and 9 divided by 3, that is y1 plus y2 plus y3. So this will be equal to 1, 3. These are the coordinates of the centroid of the triangle. ठीक है, I hope you understood this question. It's a very simple question if you understand the flow correctly. ठीक है, please make a note of this much. I'll give you 30 seconds and then we'll move on to the next question. Okay students, so we will end the session here today. Next time we will continue with remaining questions in this problem set. ठीक है, we will end the session today. Keep studying, keep practicing, because without revision you won't be able to understand what I teach in the next lecture. So thank you everyone. Once again, we'll meet again in the next session. Thank you.